Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be dealing with 15 MCQs in a session, and as part of which today we are going to do Indian Labour Force, and this is part 1. So ये सीरीज क्यों important है? See, when we look at the examination pattern of UPSC EPFO, be it APFC, आप APFC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या AO और EO के लिए कर रहे हो, in both the cases labor laws and industrial relations is one of the most important topics, and 120 questions में close to 15 plus questions are asked from these topics only. एंड अगर आप सही से बेसिक्स भी सही से पढ़ के सही से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली 10 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द kind of potential that it has and the weightage that it has. So if you really want to score high in either APFC or EO or AO examination, I suggest you to go through these sessions regularly. Why? Because whatever the content related to these topics, जो भी topics मैं बता रही हूँ, all those we are doing in the form of questions भी करेंगे, हम उसका discussion भी करेंगे, thereby आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO 2025 very soon. So I hope you really will utilize these sessions for your examination. So without wasting much time, let's get into the session. Coming to the first question, according to the International Labour Organization, which of the following groups of individuals are classified as employed? Now, labor मतलब क्या है? Labor is something, a physical or mental effort by the human beings that undertake any production process, and generally it is known as the primary factor of production, क्योंकि factor production के कई सारे factors हैं, okay, capital, land and all that various things, but सबसे पहला factor जो आता है that would be labor, because without that physical or mental effort जो production होगा ही नहीं. So for which we consider it as the primary factors, and labor force includes the current economically active population comprising both the employed and the unemployed. ओके, तो इकोनॉमिकली अगर हम लोग काउंट करेंगे तो दोनों ही आते हैं, एंड द टर्म एम्प्लॉयड हैज बीन डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट encompasses all those persons above a specific age who work for at least 1 hour during a specified brief reference period. वो reference period इधर 1 day हो सकता है, 1 week हो सकता है, but at least 1 hour भी work करेंगे तो we can say them as employed. मैं ये नहीं कह रही fully employed है and all that, no, simple term employed किसको बोलते हैं. So here B is the correct option. Now there is a term called paid employment. Okay, now paid employment involves individuals working under an employer for compensation for some money, which can be in cash or in kind, दोनों तरह से हो सकता है. It includes both those actively working and those with a formal job attachment but temporarily not at work. ठीक है, दोनों भी उसमें आ सकते हैं. Now which of the following statements about paid employment is or are correct? मैंने statement दे दिया है. Okay, now based on that, एक not statement but context, मैंने context दिया है. Now based on that there are various statements and you have to tell me which of those statements is or are correct. Paid employment refers to individuals working under an employer in exchange for wages or salaries which may be provided in cash or non-monetary benefits, and this is very much true, cash और kind दोनों में भी हो सकते हैं. Employees in paid employment must always be physically present at their workplace to be considered employed. ऐसा नहीं है, कई बार temporarily कुछ vacation में हैं या फिर off the site भी काम होता है, right? So in such cases, though he is working from somewhere, but that employee is still considered as an employee, right? So physically presence compulsory nahi hai in order to consider it as paid employed. So this is false statement. A person who has a formal attachment to their job but is temporarily absent during the reference period still qualifies as being the paid employment. This is very much true. Now यहाँ पे हम लोग इसको false बोल रहे तो बिल्कुल contradictory statement से. So this is true. Office employees, factory workers and service industry professionals are examples individuals in the paid employed. Yes, this is very much true. So here 1, 3 and 4 are true. So here C is the correct answer when it comes to the term paid employment. Moving on to our next question, self-employment. Now self-employment refers to individuals who work for themselves
rather than being employed by an external employer. They manage all aspects of their business and bear both the risks and the rewards of their work, right? Now, which of the following statements about the self-employment is or are correct? Let's have a quick look. Self-employed individuals operate their own business and are responsible for financial management, marketing and overall operations. Yes, this is very much true. Self-employment मतलब कोई और के लिए कर नहीं रहे, हम खुद ही हमारे लिए कर रहे हैं. So they are the ones who have to look after everything. वही अगर किसी और के साथ कर रहे हो, they must be managing the businesses, right? So this is true. Self-employed individuals must always be actively working in their business to be considered self-employed. नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है they might employ some people and delegate the work, right? In case they are not able to get involved due to any reason, कोई personal reason हो सकता है, health reason हो सकता है, कुछ business trip के लिए जाना पड़ सकता है, right? So this is false. A person who owns a business but is temporarily not working due to personal reasons still qualifies as self-employed. Yes, this is very much true. बिल्कुल second and third statement में contradictory है. Freelancers, independent contractors, small business owners are examples of self-employed individuals. Completely वो अपने हिसाब से कर रहे हैं. So this is very much true. So here again 1, 3, 4 are true. So A is the correct option here. Moving on to our next question. Which of the following characteristics defines a regular salaried or wage employee? See, उनको ही हम लोग regular salaried और wage employee बोलते हैं जो एक काम करने के बाद whatever the services that they are rendering to someone and उसके लिए they are in turn they are taking some amount in the form of either salary, monthly salary या फिर daily wages in both the cases. So here receipt of regular salary or wage for services rendered, that comes under this. Self-employed खुद का है तो कहाँ से वो सैलरी वाला है? नो. एंगेजमेंट इन कैजुअल और सीजनल वर्क? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए एक आवर के लिए थोड़ा सा वर्क होता है बट नॉट रेगुलरली, राइट? सो दैट यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर आंसरिंग दिस व्हेन इट कम्स वेजेस. ओके. इन्वॉल्वमेंट इन ओन अकाउंट वर्क विदाउट हायर्ड लेबर? नो, ये खुद का ही काम है. सो इसी के एक्चुअली ए ऑप्शन को ही थोड़ा सा ट्वीक करके डी ऑप्शन दिया है. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो सी इज द correct answer here, where they are receiving some regular salary or wages for the services being rendered to a company or an organization or a person. So moving on to our next question. Which of the following statements accurately describes the characteristics of a casual wage labor? Now when we talk about casual wage labor, see, casual engagement in others' enterprises with wages received accordingly to daily or periodic work contracts. Generally ये permanent नहीं होते हैं, ठीक है? And कभी कभी daily ही उनको बस आज का काम है, ये पैसे दे दो and then done. If there is work tomorrow, the person can come, otherwise no. So उस तरह से कुछ casual engagement होगा तो then that would fall under casual wage labor. Engagement in self-employment with fixed monthly earnings? No, fixed तो होता ही नहीं है, so ये false statement है. Receipt of regular salary for services? No, ये तो है हमारा permanent regular salaried वालों के लिए, so this is also false. Participation in unpaid family work with no formal employment contract? ये भी false है क्योंकि वो तो self-employed type का हो गया है, right? So here the correct answer is option A. नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कई सारे टाइप्स होते हैं. नाउ लेट्स हैव ए क्विक लुक एट दैट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट encompasses individuals who operate their own enterprises, farms or professions independently with or without partners. Which of the following statements correctly describe the categories of self-employed individuals? सबसे पहले आता है own account workers. Now here they operate their businesses independently or with a few partners and do not generally hire labor. क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, उनसे ही पूरा काम वो they can manage, because of which they are not hiring anyone. So generally they do that. Yes, own account workers उन्हीं को बोलते हैं. True. Employers are self-employed individuals who manage businesses and hire workers to operate their enterprises. Yes, क्योंकि वो employ कर रहे हैं दूसरों को, they are hiring others, so they themselves, though they are entrepreneurs, self-employment ही होगा, still they can be considered as employers since they are employing others to
delegate their own work. So yes, this is also true इस केस में भी, जैसे अंबानी इंडस्ट्रीज या अदानी वाला या फिर टाटा वाला, दो दे इट्स देयर ओन बट स्टिल दे आर हायरिंग अदर्स टू रन देयर बिजनेसेस. सो यस, एम्प्लॉयर्स. Helpers in household enterprises are family members assisting in household run businesses without a formal employer-employee relationship. Yes, in these terms also we can call them as self-employed because क्योंकि वो खुद कर रहे हैं अपनी फैमिली बिजनेस में ही, वो असिस्ट कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को से. सो ये भी ट्रू है इसमें. Only self-employed individuals who hire labor can be considered as part of this category. No, ऐसा कुछ नहीं है. As we have seen all the categories, खुद भी कर सकते हैं, दूसरों को हायर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. In all these cases, it can be considered as self-employment. So in this case, 1, 2, 3 are true. Hence, B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements accurately describes the concept of usual status in the context of labor force measurement? Now, labor force किस तरह से, कितने employed है, unemployed है, ये सब NSSO survey करती रहती है every year. Periodic labor force survey and all that should be done under the Ministry of Statistics and Program Implementation. तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने employment rate कितना है, unemployment rate कितना है. Accordingly, the government can devise the policies, right? So उस जो approach है, जो measurement है, उसमें भी कुछ टाइप्स है. वन ऑफ दैट इज द यूजुअल स्टेटस. इसमें भी और दो टाइप्स है, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. बट इन दिस सबसे पहला है यूजुअल स्टेटस, जो नॉर्मल यूज करते हैं. Now, when we talk about usual status, now it reflects the individual's labor force status based on their activities during the major part of the 365 days preceding the survey. अगर आज वो सर्वे कर रहे हैं, NSSO वाले आज सर्वे कर रहे हैं, तो उससे पहले जो 365 डेज में वो किस तरह का काम उनको मिला है, क्या मिला है, कितने डेज का मिला है, बेस्ड ऑन ऑल दैट दे विल बी कंसिडर्ड ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड या पार्शियली एम्प्लॉयड, व्हाटएवर. ठीक है. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजुअल स्टेटस, वो नॉर्मल स्टेटस में 365 डेज के अंदर उनका किस तरह का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो कवर करता है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. सो जैसे मैंने बताया है कि यूजुअल स्टेटस में अगेन देर आर टू मोर कैटेगरीज, राइट. सो वो दो टू कैटेगरीज है, प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस. उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस? प्रिंसिपल स्टेटस refers to the activity that accounts for the majority of the person's time over the year. Yes, this is very much true. प्रिंसिपल मीन मेजर उनका काम क्या है, दैट इज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रिंसिपल. जो मेजर काम उन्होंने क्या किया है पिछले एक साल में सर्वे से पहले, दैट दे विल कंसिडर एज प्रिंसिपल स्टेटस. इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन प्रिंसिपल स्टेटस वर्क आर रेफर्ड एज द प्रिंसिपल स्टेटस वर्कर्स. ठीक है. अगर उन्होंने जो भी काम किया, लाइक एक टीचर, उसके बाद वो ट्यूशंस भी पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल टीचिंग द टीचर जो है उनका मेन प्रिंसिपल स्टेटस वही रहेगा. ओके. Subsidiary status covers any secondary activity undertaken on a short-term basis apart from the principal activity. That is to like your tuitions and all that. कभी होते ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते हैं, या फिर small time gigs कर सकते हैं. जैसे already एक कंपनी में काम कर रहे हैं, but again एक small time gig temporary कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं. All that will fall under the subsidiary status. So this is also true. A teacher who works full time throughout the year but takes up a temporary job at a bookstore during summer vacation is the best example of a principal status worker with a subsidiary status activity. This is also very much true. Obviously प्रिंसिपल स्टेटस जो मेन जॉब है उनका टीचिंग है, बट अभी वो बुक स्टोर में एक छोटा सा जॉब ले रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि उनका समर ब्रेक है एंड ऑल दैट वुड बी कंसिडर एज देयर सब्सिडरी स्टेटस. So here 1, 2, 3, 4 all of these are true when it comes to the types of measurement of employment under usual status, and yes, here D is the correct answer. Now दूसरा अप्रोच है मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, एंड दैट इज करेंटली वीकली स्टेटस. नाउ व्हाट इज द की क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग एन इंडिविजुअल एज अ वर्कर अंडर द करंट वीकली स्टेटस एज पर द
National Sample Survey Office survey. So okay, organization NSSO survey. So here when we talk about current weekly status, it is the activity status of a person during a period of 7 days preceding the date of survey. अगर आज सर्वे करें तो लास्ट 1 वीक का उसमें एटलीस्ट 1 hour be on any day of the reference week if he works, that would be considered as the involvement in the economic activity. So involvement in the economic activity for at least 1 hour on any day of the reference week, then that person would be considered as current weekly status category. So here B is the correct option. Now next type of measurement आता है current daily status. So you can see chronology, पहले साल भर का देख रहे थे, उसके बाद weekly, उसके बाद daily. So here according to the current daily status measure, what is the minimum number of hours worked that classifies a person as employed for the full day? Okay, अगर हम किसी को बोल सकते हैं कि ये full day employed है, how? It would be 4 hours or more above that. So minimum number of hours अगर कोई work कर रहा है तो 4 hours work कर रहा है, so we can say that that person is fully employed under the current daily status. So here C is the correct answer. Up to 8 hours almost. Moving on to our next question. With reference to the organized sector or regular employment in India, consider the following statements. Which of the following statements given are is or are correct? The organized sector consists of both public sector enterprises and the private sector organization. Yes, organized sector मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSUs आएंगे, उसमें private sector organizations भी आते हैं, and this is very much true. Less than 10% of the India's total workforce is employed in organized sector. Yes, as per the estimates by the government 2010 में कुछ सर्वे होता है, as per that 10% है, less than 10% है formal sector में or the regular sector. Yes, this is also true. According to the estimates from the Ministry of Labour and Employment 2010, approximately 2/3 of the organized sector employees is in the public sector while the remaining 1/3 is in the private sector. Yes, this is also true as per that survey जो उन्होंने उस टाइम पे किया था, not survey as such, estimates जो भी उनके पास डाटा था. Okay, a software engineer working in a multinational IT firm is an example of organized sector employment. Yes, this is also true. या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर रहा है, या फिर कोई MNC में कर रहा है, ऑल दीज दे आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज सेक्टर और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिकॉज उनको एक मंथली सैलरी एंड सारे पर्क्स एवरीथिंग दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, सो दे आर गेटिंग एवरीथिंग इन ए रेगुलर मैनर. Okay, so here all these statements are true, so hence D is the correct option. Now, which of the following is an example of unorganized sector employment? Now, unorganized sector workers are those who are working in either households or unorganized enterprises without any social security or security of employment, क्योंकि उनका जॉब कभी भी जा सकता है, ठीक है. उस तरह के employment को we can consider as unorganized sector. So a software engineer working in an IT company, ये तो well organized है, so this is false. A bank officer in a government bank, again well organized, regular वाला है. A professor in a university, yes, this is also regular or organized sector. A street vendor selling handmade handcrafts, this is a form of unorganized sector employment, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, आज होगा बिजनेस थोड़ा सा, कल नहीं होगा, या फिर आज पैसे मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे, उस तरह से. So here C is the correct answer. So friends, hope you have liked this session. So before winding up, एक छोटा सा announcement है. EduTap अभी कुछ courses offer कर रही है for all those who are targeting UPSC EPFO APFC के लिए भी and EO and AO के लिए भी for the year 2025. Now उसमें 3 तरह के courses वो offer कर रहे हैं 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. जैसे सबसे पहला था मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर और फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग आउट फॉर द कंटेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जाम के लिए वो सारे एक ही जगह पे उनको चाहिए. एंड हियर उनके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट series, strategy sessions, what not, you'll get everything. And every week, every Thursday, कुलदीप सर खुद एक सेशन लेते हैं एंड किस तरह से इतना कंटेंट को आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड ऑल दैट ही विल बी गाइडिंग यू, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब भी क्लैरिफाई करते रहेंगे. नेक्स्ट कम्स टेस्ट सीरीज प्लस.
इसमें क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ लेते हैं, जैसे कि कुछ रीजनिंग क्वांट हो गया, बट कुछ सब्जेक्ट्स जैसे लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पॉलिटी, उस तरह से वो सोचते हैं कि कहीं पे कंटेंट मिल जाए तो अच्छा है। ये उन बच्चों के लिए बहुत सही है। हियर यू विल बी गेटिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स का है कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एंड ऑल दैट, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वो भी मिल जाएंगे। नाउ थर्ड आता है आपका टेस्ट सीरीज। नाउ इसमें ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या एक बार ऐसे एग्जाम भी दे चुके हैं, एंड नाउ दे आर लुकिंग आउट, प्रिपरेशन बिल्कुल हो गया उनका, बट नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, और रियल एग्जाम फील लाने के लिए कुछ मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट. For them this would be the best option. So if you have any doubt related to any of these courses, you can always reach out to the team, any of the team members, and get your doubts clarified, so that you can make an informed decision for purchasing these courses. Thank you very much for being with me so patiently and hope to see you all soon with another session. All the best and thank you once again.